अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है पीएम म्यूजियम है और उसका विजिट, इसका टाइटल है वियोन विजिट प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम। मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना है। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो घंटे तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। पढ़ते हैं न्यू दिल्ली। Celebrate the world's most populous democracy. Experience the journey of independent India. Meet the architects of the country through the decades. Let's explore the legacies of India's prime ministers. The Pradhan Mantri Sangrahalaya is an endeavor by Prime Minister Narendra Modi aimed at inspiring the younger generations. The one-of-a-kind museum is located in Teen Murti Bhavan in central Delhi. It has opened its doors to the public only recently. The museum is split into two parts: the Teen Murti Bhavan heritage building that was once the house of Jawaharlal Nehru, and a newly constructed building that houses many exhibits and interactive experience zones. This museum consists of two parts. One is in the heritage building behind me, and the other wing is in the newly constructed building right over here. Now, this has just opened to the public last month, and we are here to explore all the exciting tech behind the exhibits at the museum. Let's take a look. We are here to meet Saurav Baik, the CEO of Tagbin, which is one of the companies that developed the exhibits at this museum. Saurav. Welcome, Johan. Welcome to Pradhan Mantri Sangrahalaya. So you're the man behind this entire... There's an entire team, yes. Our company was responsible for the design and technology of this project. Otherwise, there were almost 500 people who have worked on this project. So there's a lot of people involved in this, and there's a lot of moving parts in this museum. What are we looking at here? What you see is a national emblem. That's levitating in the air. Yes, exactly. This is a work of art and technology. The way it works is that it has two electromagnets, and they are synchronized in such a manner that it never goes out of its field. The levitating national emblem makes for a striking first impression. The cool technology has been used all over the museum. Just beyond the kinetic flags, there is a mysterious exhibit. It's called Time Machine. Here visitors get to relive the past. You can see India change before your eyes. In this room, there are 9 4K laser projectors. They create a nearly 360-degree field of view. The display showcases many defining moments in the country's history. Next up is the engagement zone. For most visitors, this is perhaps the most exciting part of the museum. I take it this is one of the more popular exhibits. This is a place where a visitor can click a picture with any prime minister of his choice. The setup is designed as if this is like a meeting room of a prime minister's office. We see a picture of prime minister in such kind of an environment. Can I try with Modi? Yes, we will do that for you. Is he the most popular as well? I think 95% of the visitors prefer Prime Minister Modi. But he's also the current one, so it makes this photo like the most believable, I think. Also. Exactly, that's also the reason behind it. I'm going to choose Narendra Modi. You have to look at the camera. Okay. Yes, you are at the right angle. So 3, 2, 1. And here is your picture. You can come and see it. Oh, that is brilliant. So you can share it. What's your email? All right. It is in your email ID That's now. all automated. This is one of the several interesting exhibits in the experience zone. You can also wander about and greet your favorite Indian Prime Minister. The video will be emailed to you.
In another exhibit, you can hold hands virtually with a chain of people. You can also end up on the Wall of Unity while holding hands with other visitors. Receive a handwritten letter from your favorite Prime Minister. The way we have done, we have actually digged out letters, handwritten letters, and have done a machine learning and image processing on top of it. And then on the basis of that, we have understood the way they write. And then it will write a customized message for you, and then it will be a signed signature. Which Prime Minister you want to try? I'm going with Modi here as well. Again, okay. It will write your name in the handwriting of Prime Minister Modi. It's the same handwriting of Prime Minister. That's quite something. And then it will sign in the bottom. In total, they had around 200 letters from each Prime Minister. This is how it is. You can see it, your name and the signature of Prime Minister. Feel like I should not damage this document. You can frame it and you can, keep it safe with you. Do you have a framing service also? Not currently, but we would have it in the future. Very precious. Yeah. In another exhibit in the Experience Zone, you can color a rocket that can be scanned into a computer. Visitors can see the rocket take off from Earth on India's missions to space. And this is not the only exhibit that is focused on India's future. So this zone is called a helicopter zone. Here what we are doing is basically we are taking visitor to the future of India. So we will fly across different iconic projects which will be completed in future, and whenever the visitor sits here, it takes them to the right into the future. We have a kinetic system on which this basically the whole system moves, and the videos are actually synced with the motion of this helicopter ride. So do you want to go on a ride? Yeah, let's fly away. Okay, let's start, and we will turn off the lights and let's start. While most museums are focused on the past, at the Pradhan Mantri Sangrahalaya, the visitor can get an insight into India's tomorrow, and even contribute towards a vision of where India will be after 100 years of gaining independence. So what do we have here? Write your vision for India 2047. So this particular exhibit is about where visitor can come in and they can write their vision for India in 2047 when India will complete the 100 years of its independence. The way this works is that any visitor can come in, click their picture, write their name and give a message how they perceive that India will be in 2047. And what we are doing here is that we are collecting all the feedbacks and doing again machine learning on it and giving it to the Prime Minister's office that this is the vision want of the people of India, that this is what they want you to do. So this kind of become a kind of a tool for a policy making because we will be collecting lots of feedback here. So let's do it. In India, if I'll write this, Right, this for will the pharma industry to yeah, boom. this will pick up the pharma thing. Okay. And then we submit it. All right. It will automatically come here. Oh, So for that's example, we are doing a machine learning on the text part of it, and then finding out the most repeated kind of suggestions, and then creating a chart and bar graph that this is what people are asking about. Until now, over 60,000 inputs have been given by visitors to the museum. They plan to submit the findings to the Prime Minister's office after getting around 100,000 suggestions. Saurav also shows me the exhibit for the Pokhran nuclear test. The room has been set up like a control room. When the explosion happens, the entire platform that we stand on starts shaking. There are so many exhibits and activities. I'm curious about the back-end operations. How do they ensure that all the exhibits stay online at all times? So this is the back end of how all this comes together, huh? This is the control room where we control all the devices. What we have here is the content upload. That means we pick up any exhibit, and if you wanted to change the video, we can simply drag and drop here, and the change will get reflected in that particular exhibit. So entire museum is on a single network,
and it has a IoT devices which basically tells the temperature of it, the CPU usage of it, and also the status of it, and that is what is being shown here. I'll give you one of those audio guides. This is for you. You can take it. We have a headphone along with them, so you can experience the museum on your own. All right. Well, thank you so much for the tour. It's been absolute pleasure to see the museum. I'll just check out the rest of the exhibits on my own. Okay, thank you. All right. Thank you. This audio guide is more advanced than what I've seen in other museums around the world. Here, the guide is synced with your movement inside the museum, and it plays the right explainer when you reach the exhibit. Currently, you can select either of the two languages, English or Hindi, but there are plans to add 6 international and 22 Indian languages to the system in the coming months. After a long but rewarding day at the museum, it is time to leave the Pradhan Mantri Sangrahalaya. To sum up my experience, the exhibits are world-class. I've got a crash course in India's fascinating history and its inspiring premieres, past and present. जी तो व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही कमाल के डिजिटलाइज म्यूज़ियम, प्राइम मिनिस्टर जितने भी रहे हैं इंडिया के और उनका जो दौर है उसको एक म्यूज़ियम की शक्ल दी गई है। और जिस तरह से आप डिजिटलाइज करके उनको, जिस तरह वो चेयर पे बैठे हैं, साथ में किसी भी प्राइम मिनिस्टर की आप पिक्चर लेना चाहें तो वो पिक्चर ले सकते हैं आप। वो हेलीकॉप्टर वाला जो सीन है, हेलीकॉप्टर में आप विजिट कर सकते हैं और इन फ्यूचर में इंडिया कैसा होगा, किस तरह से वो दिखेगा, किस तरह से सारी चीज़ें, और बैकअप पे जिस तरह से वो वीडियो को एडिट करते हैं उसी टाइम पे सारी चीज़ें करते हैं। कमाल का तब म्यूज़ियम था, मैंने पहली दफ़ा ही देखा इस तरह का म्यूज़ियम। क्योंकि म्यूज़ियम होता है जो कुछ चीज़ें आपके पहले पास्ट की थी वो लाके एक जगह पे रख दी जाती हैं, आप देखते हैं तस्वीरों में, या उसको सजा दिया जाता है, उसमें आप विजिट करते हैं। जिस कहीं आर्मी का म्यूज़ियम होता है या जिस तरह से हमारे लोक फेसा है उसका म्यूज़ियम होता है। बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं कुछ पाकिस्तान में भी, लेकिन इस तरह का म्यूज़ियम मैंने पहली बार देखा और बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। और इस तरह की चीज़ें जब लोग और दुनिया देखती हैं तो फिर कुछ सीखते भी हैं और कुछ कोशिश भी करते हैं कि हम इस तरह का कुछ करें, कुछ नया, कुछ हट के। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त। जब ये वो म्यूज़ियम के अंदर जा रहे थे, सामने बिल्डिंग नज़र आ रही थी, उस वक्त मैं देख रहा था बिल्डिंग तो छोटी सी है, म्यूज़ियम के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो ये छोटी सी बिल्डिंग के अंदर कैसे? छोटी नहीं है, वो जो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका घर, उसी को ही उन्होंने म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है। वो काफ़ी एरिया में है, कुछ लेकिन म्यूज़ियम का वो काफ़ी ज़्यादा एरिया घेरा जाता है और ये डिजिटलाइज है और यहाँ से पता चल रहा है कि इंडिया IT सेक्टर में कहाँ पर है। और उसने अपने जो देखेंगे IT के अंदर उनके लोगों ने अपने जो फ्यूचर गया है उसको भी वो देख रहे हैं और जो आगे मुस्तकबिल है उसका भी वो लाया अमल उसके अंदर उन्होंने पास्ट को भी देख रहे हैं, फ्यूचर को भी देख रहे हैं और उसके ऊपर सारा उन्होंने बनाया है। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो डिजिटल म्यूज़ियम जो है ना वो पहली दफ़ा देखने को मिल रहा है और वो भी इंडिया में। और यूरोप कंट्रीज़ में तो होता तो वो देखने हैरानी नहीं होती, लेकिन इंडिया में देख के बहुत ज़्यादा हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई कि बिल्कुल जी देखें कि जब आप काबिल हो जाते हैं तो फिर आप अपनी काबिलियत दुनिया को दिखाते हैं तो दुनिया फिर अप्रिशिएट करती है। तो इससे बहुत कुछ सीखने को, नए नौजवानों को भी सीखने को मिलता है कि देखें कि दुनिया आज कहाँ पे पहुँच गई है और हम कहाँ पे हैं। तो फिर उनके अंदर भी वो, हम कहीं भी रहें, दुनिया आगे बढ़ना है, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी और हम अपने सियासी मामला, मैं पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हम वहीं पे उलझे रहेंगे जब तक हम उनमें से निकलेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये जो हमारे इंतहा पसंद मुल्ला हैं वो कह देते हैं जी इस्लाम का तो इसके अंदर है ही नहीं ना इस्लाम। वो आज भी वो वही वहाँ पे जगहंसाई करते हैं जी दुनिया तो घूम ही नहीं रही। ठीक है, साइंस जो है ना वो हमारे जो है ना वो हमने ये साबित कर दिया है। तो ये हमारे मुल्ला भी छोड़ दे, लेकिन जो नौजवान है चाहे वो हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी है, जब वो ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसी चीज़ें विजिट करते हैं तो उनके अंदर, जब देखिए बच्चे जो हैं वो जो चीज़ देखते हैं वो उनको अपना जो है ना वो फ्यूचर में देखते हैं कि हमने आइंदा ये बनाना, हमने ये देखना है, हमने वहाँ पे ये चीज़ देखी है। तो आने वाली जो नस्ल के लिए ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं क्योंकि आने वाला दौर जो है वो IT का ही दौर है
और आगे जो मीडिया का ही दौर है तो उसके लिए ये ऐसे म्यूज़ियम बनाना बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे म्यूज़ियम में जब बच्चे जाएंगे, जो नौजवान जवानी से पहले वहाँ पर विज़िट करेंगे तो ऐसी चीज़ें देखेंगे। फिर वो ये भी देखेंगे कि पहले हम क्या थे, अब हम क्या हैं और आगे हमने क्या बनना है। तो फिर वो उसी के मुताबिक उनके ज़हन के अंदर उनके अंदर जो है ना वैसी ही ख्वाहिशें पैदा होती हैं। फिर वो उसके ऊपर अमल दरामल करते हैं, फिर वो अपने आप को उस काबिल बनाने की कोशिश करते हैं। सब तो नहीं बन पाएँगे, लेकिन अगर उसमें से 5-7 भी निकल आते हैं तो फिर वही जो है ना वो मुल्क का नाम रोशन कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त है ये, जितना भी एप्रिशिएट किया जाए बहुत ही कम है। ऐसी चीज़ें जो है ना बिल्कुल पहली दफ़ा देखने को मिल रही हैं और ऐसे जो है ना इक़दामात तभी नज़र आते हैं जब ग्राउंड पे ऐसी चीज़ें होती हैं, लोगों में काबिलियत आती है तो फिर ऐसे होते हैं। बिल्कुल जब इंसान काबिल हो जाता है तो दुनिया उसको दाद देती है। जी बिल्कुल ज़बरदस्त वीडियो और बहुत मज़ा आया ऐसी वीडियो। और भी ऐसी वीडियोस आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसको अपने चैनल पे ज़रूर लाएंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे। और जिस दोस्त ने ये वीडियो भेजी है उसका भी बहुत शुक्रिया। आई होप सो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।